Hi students, last time we had seen the introduction of poverty, we had seen the social exclusion, we have seen vulnerability. Now again we will see, हमने last time बात किया था कि poverty is different in the mindset of different people. ओके पॉवर्टी कोई एक चीज़ हम नहीं बात कर सकते हैं अगर किसी के लिए शायद किसी के पास कार ना होना इज़ मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, किसी के लिए किसी के पास लैंड नहीं होना इज़ द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी. सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी. बट वेन वी टॉक अबाउट पॉवर्टी एज ए नेशनल टर्म, अगर हम इंडिया में बात करें पॉवर्टी की एज ए कंट्री, then we should have a certain definition or we should have certain criteria which can define whether a person is poor or he is not poor. So today we are going to see poverty line. Now poverty line, what exactly is poverty line? Poverty line is an imaginary line. एक imaginary line है, हम एक imaginary एक line खींच लेते हैं. The people above this line are called APL, above poverty line, and people below this line are called BPL, below poverty line. So what is this line? This line is an imaginary line where we take into consideration the existing development level. अभी हमारी कंट्री किस लेवल पे डेवलप कर रही है और हाउ मच डेवलप्ड वी आर, वी टेक दिस इनटू कंसिडरेशन. ऑल्सो वी टेक द सोशियो इकोनॉमिक एक्सेप्टेबिलिटी, मीन्स जो सोशल लाइफ है हमारी, जो इकोनॉमिक लाइफ है, उसकी क्या क्या कल्चर्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, ऑन दैट बेसिस वी डिसाइड इट. ये आपको आगे और क्लियर होगा. सो दिस इज व्हाट वी से पॉवर्टी लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट, कि ये सही है इन एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट. अभी जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उस लेवल पे, because we cannot talk about America as our country. America is very developed, so poverty line will be very higher. But in case of India, it is different. So, appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms. Means society के जो norms है, society जो follow करती है कि ये चीज़ें करनी, दिवाली में नए कपड़े लेना है, it's a kind of social norm. So whether a person can purchase it or not purchase it also defines whether he is poor or rich. So there are certain social norms also. So this line is taken or is made by two things, that is the existing development level and the social norms which we follow in our country. Now this changes from time and place. Time is from today. If you see 10 years back, the cost of things were much low, so the poverty line will be lower. Because if I say, if I want to take 1 kg of rice 10 years back, it might be 30 rupees per kilo, a good quality rice. But now we are paying 60 rupees per kilo for a good quality of rice. So the price has gone up, so the basic level of living, subsistence living will also go up. So poverty line also will go up. बिकॉज आज से 10 साल पहले रहने के लिए हमको कम पैसे लगते थे, आज ज़्यादा लगते हैं. सो हमारी जो पॉवर्टी लाइन है इट शुड ऑल्सो गो अप, उसकी जो वैल्यू है इट शुड गो अप. ओके, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे थोड़ी देर बाद में. नेक्स्ट इज, इफ यू टॉक अबाउट पॉवर्टी वी सी टू फैक्टर्स. वन इज इनकम और कंजम्पशन. हम कितना कमा रहे हैं इसके बेस पे हम रखेंगे एक पॉवर्टी लाइन कि इफ़ ए पर्सन, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, इफ़ ए पर्सन अर्न्स 1000 रुपीज़ per month, then he is above poverty line. This can be a part of income. Consumption, if he is taking 2000 calories per day per person, then it is, he is above poverty line. So it can be, ये भी आपको आगे डिटेल्स में है. Now who decides the poverty line? Government decides the poverty line. Very good. Now the government will decide on which basis. उनको थोड़ी सपना आएगा कि ये चीज़ें हैं. So there are always surveys done. There are certain people who do the survey. There is an organization. They do the survey all over India, a random survey or a sample survey, and then they decide that this is the minimum level of income a person should have to live a good life or minimum subsistence life. So the poverty line is estimated periodically every 5 years by conducting surveys. Every 5 years they change the poverty line. They do certain surveys. Now who does these surveys? The surveys is done by NSSO. This is a very important short form, NSSO. It is National Sample Survey Organization. Okay, now moving ahead, we will see the Indian poverty line, or how in India we define the poverty line. First we said that
poverty line can be defined in two terms, that is income and consumption. So this poverty line which we are sharing with you, this was in 2011 and 12. It has been changed again in 2016, but we are हमारे टेक्स्ट बुक में दिया 11-12, so we will follow these guidelines because the questions which will come in exam will be based on this book. So in this book we have taken a survey of 2011 and 12 on the basis of income. So there are two areas which we have divided, rural and urban. So the poverty line for a person was fixed at rupees 816 per month for rural areas and rupees 1000 per month for urban areas. So if a person in a rural area is earning 816 rupees per month, then he is above poverty line. And a person in urban areas, cities, if he is earning 1000 rupees per month, he is above the poverty line. Now what are the factors which we decide when we take poverty into consideration? Factors are shelter, food, education, clothing, maybe shoes. So they take everything what a person requires in a month. Maybe for example, if a person requires shoes, take an average life of 1 year, and if that shoe costs him 1200 rupees, so per month cost will be 100 rupees. So they'll take 100 rupees. Rice, he requires, they take a sample survey, they require 5 kgs of rice per month. So it is almost 30 rupees per 30 rupees per kg normal rice. So it goes to 30 into 5, 150 plus 100. So ये सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, all the things which are required for a minimum living, they add it and they make a sum. So what they decided in 2011 and 12, the sample survey said that a person in rural areas requires 816 rupees per month to survive, minimum for his minimum surviving, and a person in urban areas requires 1000 rupees per month to survive. Okay, this was on the basis of income. Okay, now we take another part which is on the basis of consumption. Consumption means the food we eat or the calories we take inside our body. So it was finalized that the accepted average calorie requirement in India is 2400 calories per person per day, not a month. Per person per day, he should take 2400 calories in rural areas and 2100 calories per person per day in urban areas. Now the difference is why we are taking more calories in rural areas than in urban areas, because the people in rural areas are involved in more physical labor. वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके काम में ज़्यादा मेहनत होती है. So they require more calories. So now clear, we have seen two things: income 8016 for rural areas, 1000 for urban areas per month. In consumption 2400 calories per person per day in rural areas and 2100 calories per person per day in urban areas. Now here also if you see, जो income part में एक चीज़ लिखना मैं शायद भूल गया हूँ कि rupees 816 per month per person. What does it mean? Suppose I'm staying in an urban area. मैं एक urban area में हूँ, urban city में हूँ. I have a family of 4 members. So my income should be 4000 because 4 members 1000 per person per month. So 4000 per month for my family. Understood? Okay, we'll go ahead. Very simple था ये. Now we will see the poverty estimates. Now what do you mean by poverty estimates? So how the poverty has been reduced or increased, or what happened to the poverty in terms of our history or in terms of our previous years. We'll just have a look into this. Yeah, the first is poverty ratio. The second is number of poor people in millions. About India. So as we said in 1993-94, the rural poverty ratio was 50%. Means 93-94 में 50% लोग rural areas में were below poverty line. They were poor. In urban areas it was 32%. So people living in urban areas 32% were poor or below poverty line. So total if you take percentage wise it was 45%. Now यहाँ पे हम add नहीं कर सकते 50 plus 32 is equal to 82. No, because the number of people living in urban and rural areas are different.
So when they take a total percentage, it is 45%. If you see, so यहाँ पे क्या दिख रहा है, clear, the picture is very clear that the number of poor people in rural sector are more than the urban sector. Now come to the next columns. Number of poor people in millions. So if you see, in rural area it was 329 million people who were poor, and in urban areas 75 million people were poor, and if you take total it was 404 million people they were poor. Now if you see the next row, 2004-2005, in poverty ratio it is 42%. Poverty has been reduced by 8%. 8% poverty हमने reduce कर दिया percentage wise. Urban areas 26%, again the poverty is reduced by 6%. Total 37%, 8% से poverty reduce हो चुका है. Now see the figure here. Number of poor people in million is 326 million people who are poor in rural sector, 81% people who are poor in urban sector, and total is 407 million people who are poor. Now try to analyze this slide. अब आप देखिए, 1 second, this one, टोटल हमारा जो पॉवर्टी था रिड्यूस हो गया बाई 8%, 45 से 37 चला गया, राइट. तो परसेंटेज कम हो गया, मतलब लोग कम हो जाएंगे. बट व्हाट वी सी हियर इज 407, 3 million people are added. Now how we analyze this scenario? We will see where the increase is there. If you see, it was 329 rural people were poor, it became 326. Okay, poverty has been reduced. But if you see in urban areas, 75%, 81%, it has increased. How? Because, लेकिन यहाँ पे हमने डिक्रीज किया, बिकॉज क्या हुआ कि पॉपुलेशन फ्लक्स चेंज हुआ. फ्लक्स मीन्स द पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन सिटीज राइज्ड, इट रोज अप. Why? Because of people moving from rural areas to urban areas. So what I'm trying to say here is, though the percentage is decreasing, the government is taking efforts towards the reduction of poverty. Poverty, if you talk in terms of percentage, it is getting reduced. But because of the population rise, the number of people are not in proportion with the percentage. मतलब अगर 3% कम हुआ तो 3% लोग कम नहीं हुए, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है. सो परसेंटेज 1.5 और 1% पीपल हैव कम डाउन. आप समझ रहे हैं, 100 लोग थे, पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज हमने पॉवर्टी था 50%, मतलब 50 लोग थे जो पुअर थे, हमने उसको 10% से और कम कर दिया. सो इट केम टू 40%. सो नाउ 40 पीपल आर पुअर. बट हुआ क्या कि उस 5 सालों बाद 10% तो पॉवर्टी रिड्यूस कर दिया हमने, लेकिन पॉपुलेशन 100 से लेके 200 हो गई, डबल हो गई. सो इफ यू टेक 40%, द पीपल विल बी 80. So population is increasing, so that is the reason we are not able to reduce the number of people who are poor. We are able to reduce the percentage, but the number of people who are poor are not getting reduced. बहुत ज़्यादा confuse होने की ज़रूरत नहीं है. Just to give an insight of the slide of this table, I have shown this to you. So just try to analyze this, what is happening. So it is very clear that the poverty is it is clear from the table that there is a substantial decline in poverty ratios in India from about 45%. आप देखिए 45% था टोटल में परसेंटेज 93-94 में, and it came to 22%. A very good effort. More than 50% reduction was there, if you talk only about table, in 2011 and 2012. Although the percentage people, now this is what I was trying to say, although the percentage people under poverty declined, the percentage declined, but the decline in number of people below poverty is not at the same rate. So अगर 10% रेशियो कम हुआ है तो 10% पीपल कम नहीं हुए. इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ आइदर स्लो और सेम. वाई? बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. अंडरस्टूड? दिस वॉज द पॉवर्टी एस्टिमेट ऑफ इंडिया. नाउ वी हैड सीन वन थिंग, दैट इज वल्नरेबिलिटी aspect of poverty. We have seen two aspects. One was social exclusion and one was vulnerability. Now we'll see about the vulnerability. Vulnerability means we have seen that the chances of a person remaining poor or becoming poor or remaining poor for the lifetime is called as vulnerability. So now we'll try to see here or analyze which are the sectors or which are the segments or which are the classes who are
पुअर. अगेन आई विल सी अ टेबल. ये टेबल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, यू कैन गो थ्रू इट इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. So here if you see the graph, it is poverty in India in 2000, the most vulnerable groups. Now if you see here, this is scheduled tribe. So what this graph tries to show is 43% of scheduled tribe families were below poverty line. तो 43 families out of 100 we are talking about. अगर 1000 families हैं तो 430 families हो जाएंगी. So 43% families in scheduled tribe are poor. 29% families are poor out of 100 families in scheduled caste. Now if you see the average में जो Indian families हैं उसमें 22 families ही poor हैं एवरेज में. बट इफ यू सी स्पेशली अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब इट इज 47%. इफ यू सी स्पेशली अबाउट द शेड्यूल्ड कास्ट इट इज 29%. सो दे आर कंपेरेटिवली, इफ यू कंपेयर विद द एवरेज ऑफ इंडिया, दे आर मोर हायर. सो दे आर मोर वल्नरेबल. तो चांसेस ज़्यादा हैं कि ये 43 फैमिलीज पुअर ही रहें और ये 29% फैमिलीज पुअर ही रहें. सो दिस इज कॉल्ड वल्नरेबल ग्रुप्स. सो इट्स क्लियर दैट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट दे आर, बिकॉज हिस्टोरिक टाइम से इनको मेन स्ट्रीम से अलग रखा गया है. दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम. दे आर मार्जिनलाइज्ड. वी हैव लर्न दिस इन अवर लास्ट ईयर इन क्लास 8 व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन. सो दे वर मार्जिनलाइज्ड. इनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली. दैट्स वाई दे हैव बीन downtrodden or they are backward. So they are not able to cope up with the mainstream. So what I want to say is these are the main vulnerable groups. Now coming to the next part, we see casual laborers, rural. Casual labor means they don't have a fixed job. कभी जॉब मिला कभी नहीं मिला. Either they are seasonal employed or they are disguised employed, unemployed, whatever it is. So they are casual labor farm in rural areas. कौन casual labor rural areas में? The people who go to work in the fields. So when there is work, they go, they earn per day some wages. When there is no work, they sit at home idle. In casual labor, non-farm, rural, urban. Because urban cities में कौन होते हैं casual laborers? For example, painter. तो रोज़ थोड़ी पेंट करने का काम मिलता है उनको, कभी मिला कभी नहीं मिला. So they are casual laborers. The people who do what we say, plumbers, electricians, इनको डेली काम नहीं मिलता है. जब कुछ काम है तब जाते हैं, काम करते हैं, पैसा मिलता है. तो दे आर कैजुअल लेबर्स. सो कैजुअल लेबर्स वेर मोर वल्नरेबल than the people who have fixed jobs. They are more poor. 34% in casual labor in rural and also 34% in urban. So these are the certain vulnerable groups which we have seen in this slide. Now we will analyze this poverty line. The proportion of people below poverty line is not same for all social groups. So what here they want, जो slide में देखा हमने कि जनरल जो इंडिया की पॉपुलेशन it is 22% or 22 out of 100 families are poor. But in scheduled tribe it is higher, it is 47%. For scheduled caste it is 29%. So it is not same in all the social groups. Because हम बात करें social groups की तो कौन से groups vulnerable हैं? ST, SC, casual laborers, both rural and urban. Okay, so they are different. Now coming to the next one, social groups which are most vulnerable, जो बहुत ज़्यादा vulnerable हैं towards poverty, are scheduled caste and scheduled tribe households. We have seen 49% in scheduled tribe and 29% in scheduled caste. So they are more vulnerable towards the poverty. Now economic groups कौन से हैं? Casual laborers. So economic groups which are most vulnerable to poverty are rural agricultural labor households and the urban casual labor households. So जो casual laborers हैं, both rural and urban households, they are vulnerable to this. So in some cases, women, elderly people, infants are denied access. I think slide छोटा हो गया क्या? Okay, you can see this in notes. I'll just try to explain this. ये आपको नीचे का लाइन नहीं आ रहा है. I cannot small, इसको small नहीं हो रहा है. So in some cases, women, elderly people, and infants are denied equal access to the family resources which are available. For example, जो अगर फैमिली पुअर है
बट व्हाट हैपन्स इज समटाइम्स एल्डरली पीपल आर इग्नोर्ड, उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाते, उनको इल ट्रीट करते हैं. वुमेन आर नॉट टेकन केयर ऑफ, बिकॉज जो भी मेन कैलोरी कंजम्पशन इट इज़ डन बाय द मेल कैटेगरी, वुमेन्स को वो पूरे फायदे नहीं मिलते हैं. इन्फेंट्स, छोटे बच्चे, स्पेशली गर्ल, फीमेल इन्फेंट्स, उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती है. गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दिया जाता. इफ ए पर्सन इज पुअर ही विल ट्राई टू मेक हिज सन एजुकेटेड rather than the girl. So these benefits are not getting to these people, so they may be also, they can be taken as a vulnerable class. बिकॉज ठीक है, अगर फैमिली अच्छी फैमिली है तो दे कैन, हमेशा नहीं होता है, बट इन सम केसेस वी सी दैट जो ओल्ड पीपल है, वुमेन एंड स्पेशली फीमेल इन्फेंट्स, दे डोंट गेट द प्रॉपर अटेंशन एंड केयर ऑफ द फैमिली, सो दे आर ऑल्सो वल्नरेबल. ओके, नाउ वी विल सी द डिस्पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स. स्टेट्स में डिस्पैरिटी है, interstate disparities we call. Some states poverty is there everywhere in India accepted, but in some states it's very high, in some states it's very low. So we'll see here. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं है, you have to just go through this. If we talk all India, 21% people are poor, 21.9%, or you can say almost 22% are poor. But if you see in Bihar, it is 33.7, 34%. तो पूरे इंडिया में 22% ही पुअर हैं, लेकिन हाईएस्ट पॉवर्टी इज इन बिहार विच इज 37%, 34%, सॉरी 33.7%. एंड इफ यू सी इन केरला इट इज जस्ट 7.1%. इफ यू सी इन हिमाचल प्रदेश इट इज 8.1%. इफ यू सी इन पंजाब इट इज 8.3%. सो ये नेचुरली जो है ये ग्राफ ग्रो होते जा रहा है. द नंबर ऑफ पुअर पीपल आर गेटिंग इंक्रीज्ड परसेंटेज वाइज. ओके, अंडरस्टूड. Graph is not so important, just try to understand that poverty is there in India, all India, but the number of poor people in states varies, it depends. आगे आप देखेंगे जो मजदूर लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा, they are from Bihar and Jharkhand, Bihar, Jharkhand, Odisha, in that places, because poverty is there, people are not getting enough job opportunities, so they move out of their state and they go to some other place to work, to earn some money. Understood? This is about interstate disparities. Now what we are going to see is what are the causes of poverty. Now first we'll see colonial rule. During the British period, what happened? The local handicraft was being discouraged. Development of textiles industries were discouraged. If you remember in the history part in class 8, we had seen that the textile industry was totally collapsed in India. The steel industry was shut down. Later on, because of World War, it again came up. But basically, in the prehistoric times, it was totally underdeveloped. That was one of the causes of poverty. Economic growth. Economic growth, अगर हम देखें तो 80s, 90s तक, it was almost 3.5% per year. The rise in the GDP, which is not a very big thing because we have a very large population. Now, if you see, after 90s it has grown up to 6%, but still we are lagging behind. So the economic growth, अगर economic growth होगी तो क्या होगा कि we will get more job opportunities, we will get more money to invest in terms of education, in terms of making new industries, creating new jobs. But if the rate is low, then the growth or the reduction of poverty levels will be very slow. So because of slow economic growth, the rate of economic growth has been slow over years. There is a strong link between economic growth and poverty. So because of slow economic growth, the poverty reduction also was very slow. Understood? Kyun? What is the link? If we are growing economically, then we have the ability, the government has the ability to create more job opportunities, to invest into education, skill development, all these things. But if economic growth is not there, where will we find the money from to invest into these things? So because of slow economic growth, the reduction of poverty was low. Second is, next is population. So rapid growth of population, because population is increasing. अब देखिए population बहुत high increase हो रहा है, GDP slow increase हो रही है. So what will happen? The per capita income will go down. You know what is per capita income? Total national income divided by the total population of the country. So population is increasing, जो denominator है वो बढ़ रहा है, तो naturally जो आपका आएगा final value it will be less. So when per capita income is low, we cannot expect poverty to be reduced. Very simple.
पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, लोग ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो पॉवर्टी का रिडक्शन है उसका रेट भी कम हो जाएगा धीरे धीरे. Next is casual nature of employment. There are many segments like we have seen in rural areas, the landless people, they are working in this different agricultural lands. So they are very casual labor. They don't have a fixed employment. Similarly, in urban sectors also we have seen. The nature of employment in rural as well as urban areas is casual, which leads to poverty. बिकॉज आपके पास फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपको ऐसा पता नहीं कि मेरे पास में इस मंथ में 10,000 आएंगे, किसी इन सम मंथ्स यू विल गेट 15,000, इन सम मंथ्स यू विल गेट नथिंग, जीरो. सो इट लीड्स टू पॉवर्टी. नाउ वी विल सी द ग्लोबल पॉवर्टी. दिस स्लाइड इज, ये स्लाइड सिर्फ समझिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. डोंट टेक डाउन द नोट्स फ्रॉम दिस. इफ आई सेंड यू PDF ऑल्सो, तो ये स्लाइड लिखने की जरूरत नहीं है आपको. दिस इज जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. विल सी व्हाट द ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो. हमने देखा इंडियन में देर आर इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज. सिमिलरली ग्लोबल में भी डिस्पैरिटीज हैं. देर आर डिफरेंसेज बिटवीन द पॉवर्टी लेवल्स. इफ यू सी पॉवर्टी इज देयर इन द होल वर्ल्ड, बट if you compare India and America, it's very different. If you compare India and China, it's very different. If you compare India and Pakistan, it is very different. If you compare India and Japan, it's very different. So what are the differences which we have seen? We'll see certain major important things. First, if you see this slide, यहाँ पे आपको दिया गया है जो first purple line है, that purple line is of sub-Saharan Africa, African countries. So if you see here, यहाँ पे बहुत स्लो हो रहा है. द poverty reduction is there, but it is very slow. The curve is going very slowly down. Now if you see similarly into the East Asia Pacific and China, these two lines, ये दो लाइन बहुत शार्प नीचे आई हैं. So the poverty reduction is very fast. They have done certain economic reforms. They have invested into human resource development. So there are certain factors, and because of the economic growth, these factors, the reduction of poverty is very high in terms of China and the the East Asian countries. But if you see South Asia is this green line, ये वाली line है South Asia. It is going slow. This table also is given in your book. You can go through this. बहुत important नहीं है ये. There is the next table is about the different countries which we see. In Nigeria, if you see the population who earns, okay, now poverty line, ये एक बड़ा important ये है. Poverty line, international poverty line, I think I have missed that point. International poverty line is a person earning less than $1.90 per day is called poor. इंडिया में क्या देखा हमने? इफ इज इन रूरल एरिया ही शुड अर्न 816 रुपीज़ पर मंथ. इफ इज इन अर्बन एरिया ही शुड अर्न 1000 रुपीज़ इन अ मंथ. बट इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल पॉवर्टी, अगर पूरे इंटरनेशनल की बात करें हम, तो उन्होंने क्या रखा है? दिस इज डन बाय वर्ल्ड बैंक. उन्होंने क्या किया है कि $1.90 और $1.90 इफ दे अर्न पर डे, then they are not poor. Below this they are poor. So here it is shown that then in Nigeria it is 53.5 in 2009, Bangladesh, India 21.2. So this is a small a picture to show that how the global poverty scenario is present in our the global poverty scenario of our world. Now here you see the number of people have been reduced. यहाँ पे reduction है number of people का. Again you can see that ये जो ऊपर पर्पल जो है, this is sub-Saharan, means African countries. The number of people have been coming down. This is the India or South Asia. This is East Pacific or East Asia you can say, and this is China. So number of people देखिए कितने थे? Almost 54% people were, आप देखिए यहाँ पे 54% almost people थे जो poverty line में थे, but now they are hardly 1 to 2%.
So this shows the percentage. It was around 2,500 number of people, million people, they have come down to almost less than 2,000. So poverty has been reduced, but the rate of, यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है इस स्लाइड के अंदर कि the African countries there was reduction of poverty but it was slow, but in terms of China the reduction of poverty was very fast because of economic growth and their investment into the human resource. Simple. इसके आगे आपको कुछ याद रखना नहीं है स्लाइड के अंदर. दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, फ्यूचर में भी इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना ये. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू एंटी पावर्टी मेजर्स. नाउ वी हैव सीन द पावर्टी. अब हम पावर्टी को कैसे अलग करें, मतलब कैसे हम उसको निकालेंगे, हाउ विल वी रिड्यूस द पावर्टी और व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन टेक फॉर द रिडक्शन ऑफ पावर्टी. सो गवर्नमेंट हैज टेकन सर्टन एंटी पावर्टी मेजर्स. नाउ दिस एंटी पावर्टी मेजर्स एज वी हैव डिस्कस्ड, हमने देखा था इकोनॉमिक ग्रोथ ये होनी चाहिए. इफ देर इज इकोनॉमिक ग्रोथ वी विल गेट लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, पीपल विल स्टार्ट अर्निंग. If economic growth is there, then the government will have money so they can invest into education and other skill developments of people. So this is one part is economic development, and other part is targeted anti-poverty system. कि these are the vulnerable groups, ये लोग poor हैं, इनको target करेंगे हम. economic growth तो करेंगे हम हमारा जो करना है, that is for general sense. लेकिन economic growth कहाँ पे होगी? In the urban sectors. Most of the industries, factories you will see in the urban sectors because of the availability of market. But we see more number of poor people in the rural areas. So economic growth में maximum people who will be benefited will be from the urban sector. But if you want to develop the, or if you want to reduce the poverty in rural sectors, you should have some certain targeted schemes कि जो rural sector को target करे और उनकी poverty कम करे. So we'll go through this now quickly. Anti-poverty strategy, how it should be. It should be promotion of economic growth. We should grow economically. हमने ऐसे कुछ करनी चाहिए. We should have more of secondary sector industries, so that manufacturing industries, so that we can go towards the economic development. Or we should have targeted anti-poverty measures. Targeted कि ये segment है rural segment, agriculture farm workers, they are poor. So we should have certain targeted schemes or policies towards these kind of people. Now how we can do it, we'll see in our next slide what we have done. First we'll see about the economic growth. Now the promotion of economic growth, what are the factors which we can use here? Economic growth increased from 3.5% in 1970s में 3.5% था to 6%. 80s 90s में 6% हो गया economic growth, which is a very good growth in terms of if you see per capita income. So economic growth, what it does, it widens the opportunities. You get many job opportunities and provides the resource needed. The resource means the money which is needed for the government, it is provided by the economic growth. It provides the resources or resource needed to invest in human development that we have seen. Now what will this do? This will encourage people to send their children to school. This is an example. So क्या होगा कि if I am getting a proper job opportunity, if I am getting proper salary, so it will encourage me, I will send my child to school. So that in future he will get some better job and he will earn more. So I will have a good, what we say, returns on my investment. So this encourages people to send their children to school in the hope of getting better economic returns, right? So if the economic growth happens, these things will happen. Now we'll talk about the next point is targeted anti-poverty measures. Now government has taken certain steps towards this, because we have seen that the economic growth will not affect the people who are in the rural segment. It will affect, but not to that extent. So as economic growth does not affect the poor in rural areas, we need targeted anti-poverty program for the rural people. So what are the program? First we will see, आपने बहुत बार नाम सुना होगा मनरेगा. That is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. This act came in 2005, and this act says that the rural households will get 100 days of पेड वर्क. इनको 100 दिन, अभी इसमें मनरेगा में वो नाम नोट करते हैं, हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, हु आर वेरी पुअर पीपल, एंड दीज पीपल विल गेट एटलीस्ट 100 days ऑफ वर्क फ्रॉम द गवर्नमेंट. ओके, सो मनरेगा 2005, इट इज ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म, याद रखिएगा. मनरेगा 2005 एम्स टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट to every household to ensure livelihood security in rural areas. Every household means not every household सबको दिया जाए, उनके पास में लिस्ट होती है. They take people who are below poverty line, who are the poor of the poorest,
and then they make a list and then they call them for work. If the government fails here to give them 100 days of work, then government will pay them salary. सपोज एक हाउस होल्ड है, वहाँ पे उसको उन्होंने सिर्फ काम दिया 50 दिन का, उसको काम मिला नहीं 50 दिन का, तो गवर्नमेंट को 50 दिन की सैलरी उसको देनी पड़ेगी उस बंदे को. उसके 100 दिन की सैलरी फिक्स्ड है, काम उसको दिया जाएगा. वो काम पे नहीं जाएगा तो अलग बात है, लेकिन काम नहीं मिला तो उसको पैसे दिए जाएंगे. दिस इज अबाउट मनरेगा. देन विल सी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. इट वॉज इन 1993. This shows it. The major aim was to create self-employment opportunities. वहाँ पे self employment opportunities बढ़ाएंगे. They will give certain loans for allied agriculture industries to open a business. They will give certain loans from 1 lakh to 2 lakhs, and they will do. The people will start working. They will start business, or they will start any other thing other than agriculture. एग्रीकल्चर के लिए लोन नहीं मिलेगा इस योजना में. आपको कुछ बिजनेस करना है, कुछ डेयरी करना है, वट एवर अदर देन द एग्रीकल्चर, आपको इसमें यह मिलेगा 1 to 2 lakhs. सिमिलरली सेम टाइप का एक और एक्ट था विच वॉज इन 2 साल बाद इन्होंने एक और एक्ट निकाला, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. इट वॉज सेम, बट यहाँ पे इन्होंने एक रखा टारगेट कि वी विल हैव 25 lakhs जॉब हम क्रिएट करेंगे. इसके पहले जो हमने देखा प्रधानमंत्री योजना में कोई ऐसा फिक्स टारगेट नहीं था. उन्होंने खोल दिया था कि जिसको चाहिए आके लेके जाओ 1 to 2 lakhs लोन. यहाँ पे इन्होंने सब्सिडीज़ बढ़ा दी, यहाँ पे उन्होंने 25 लाख का टारगेट रखा, प्लस लोन की अमाउंट बढ़ा दी. इट कैन बी अराउंड 10 lakhs के ऊपर तक जा सकते हैं. अंडरस्टूड? इट वॉज मोर टारगेटेड वन. नाउ इफ यू सी द नेक्स्ट वन, इट इज़ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. ग्राम स्वरोजगार, खुद का रोजगार. तो यहाँ पे आपने अगर नाम सुना होगा SHG, विच वी कॉल इट एज सेल्फ हेल्प ग्रुप. ये आपको नेक्स्ट ईयर भी है. दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, विल सी इन डिटेल्स इन नेक्स्ट ईयर. तो हम यहाँ देखते हैं बचत गट. नाम सुना होगा आपने बचत गट. कुछ 15-20 लोग मिलके एक जो कॉमन इंटरेस्ट वाले हैं, जो आसपास में रहने वाले हैं, एक कम्युनिटी के हैं. दे फॉर्म अ कम्युनिटी. वो 100 रुपये 50 रुपये जो भी उनका फिक्स्ड है वो जमा करते हैं उस गट में. सो इसको बढ़ावा दिया गया इन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कि जो पुअर फैमिलीज़ हैं. अब पुअर फैमिलीज़ को लोन चाहिए तो उनको जाना बैंक में जाना, वो सब करना, डॉक्यूमेंटेशन, कोलेट्रल उनके पास में नहीं होता है. सो दिस दे कैन डू विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप. कुछ पैसा मिलेगा सो दैट दे कैन गेट आउट ऑफ द पॉवर्टी. अदर देन दिस वी हैड प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. सो हियर प्रधानमंत्री ने क्या किया कि जो नेशनल गवर्नमेंट है ये स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करेगी. असिस्ट किस में करेगी कि जो बेसिक हेल्थ सेक्टर है, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर है, यहाँ पे उनको वो हेल्प करेगी. क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग ऑफ रोड्स, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कुछ असिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी कि कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी स्टेट गवर्नमेंट को इन प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. अंडरस्टूड? देन वी हैव अंत्योदय अन्न योजना. आई थिंक वी आर नॉट एबल टू सी दिस, राइट? यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है. आई थिंक वी कैन Okay, I'll just tell you in short what is Antyodaya Yojana. This was for the people who are poorest of poor, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उससे भी कम लोग. This was done in 2000. So what they did, they chose 1 lakh poor families. Sorry, they chose 1 crore poor families. पुअर फैमिलीज कौन सी? जो पुअर से भी एकदम पुअरेस्ट, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उसमें से सबसे पुअर हैं. दे
identified 1 crore poor families from all over India, and what they decided that they were eligible to get 35 kilograms of grain, food grains. 35 kilograms food grains मिलेंगे उनको at a very affordable rate, that is 2 rupees per kg wheat and 3 rupees per kg rice. वो 35 किलोग्राम्स का फूड ग्रेन अपने घर में ले जा सकते हैं, जिसमें अगर वो वीट लेते हैं तो वीट विल बी 2 रुपीज़ पर के जी एंड राइस विल बी 3 रुपीज़ पर के जी, या फिर दोनों मिला के वो 35 किलोग्राम्स पर मंथ ले जा सकते हैं घर पे अपने. So this was in 2000. Then what they decided, what this quantity was increased in 2002. Again we'll come back. In 2000, what they did, they identified 1 crore poorest of the poor people. There they used to give them 25 kilograms of food grains in a very subsidized rate of 2 rupees per kg wheat and 3 rupees per kg rice. फिर 2002 में 2002 they decided that 25 should be increased to 35. Then they were giving 35 kilograms of food grains to these poor people. Then in 2003 they added more 50 lakhs people. So पहले 1 crore था. Then in 2003 they added 50 lakh people. Again in 2004 they added another 50 lakhs. So in the end of 2004 it was 2 crore people who were getting 35 kilograms of food grain per month per family, and a very subsidized rate of rupees 2 per kg wheat and rupees 3 per kg rice. This was about the Antyodaya Anna Yojana. Okay, now we'll see the challenges ahead. So we are working towards this basic thing of poverty reduction. The government is working, but we have certain challenges. Now what are the challenges? Challenges are, there are disparities are visible in poverty reduction between rural and urban areas among different states. Different states की बात करें तो poverty reduction is more in urban areas than in rural areas. This is a challenge for us because most of the poor people are living in rural areas. So this is a challenge for our country, that we should focus on the rural areas also. So, and if we see the definition of poverty, the official definition of poverty includes minimum subsistence. सब्सटेंस मतलब जिंदा रहने के लिए. तो जिंदा रहने के लिए मिनिमम क्या चीज़ की ज़रूरत है, इस पर हम डिफाइन कर रहे हैं पॉवर्टी लाइन. जबकि हमको चाहिए रीजनेबल, मतलब कि क्या चाहिए बेसिक आपको, मतलब घर, रोटी, कपड़ा, मकान. दिन में 2 रोटी, रात में 2 रोटी खा लिया उसने, सुखी रह गया, तो हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन. बट नो, देयर शुड बी समथिंग रीजनेबल. ही शुड बाई 1 पेयर ऑफ शूज इन ए ईयर. ही शुड हैव सर्टन काइंड ऑफ मीन्स, एक सिर्फ उसको जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं उसमें हम बात ना करें पॉवर्टी लाइन की. हम बात कर रहे हैं जहाँ पे कि वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सके. सिर्फ उसको खाना मिल गया, छत है सर के ऊपर, कपड़े पहनने के लिए हैं, वो सुखी है या गरीब नहीं है, ऐसा नहीं होता है. आप सोचिए जो हमने डिस्क्राइब किया पॉवर्टी लाइन, कि अगर एक रूरल एरिया में, गाँव में या टाउन पकड़ लीजिए, एक टाउन में अगर एक पर पर्सन 1000 रुपीज़ कमाता है, तो क्या वो सही में पुअर नहीं है? He is of course poor. If a family of 4 people they earn 4000 rupees, क्या कहाँ से लाएंगे, मतलब क्या करेंगे वो? 4 people का आज अगर हम बात करें किराना की, सो उसमें हमको लग जाते हैं करीब करीब 3-4 हज़ार रुपये. उसका तो पूरा उसमें चला गया. फिर दूध, वेजिटेबल्स, बाकी खर्चे जो हैं वो कहाँ से यूज़ होंगे, वो कहाँ से लाएगा वो? लेकिन हमने बात कर लिया 1000 रुपये. सो यही कहना है इस लाइन का कि हम मिनिमम सब्सिस्टेंस की बात ना करें, हम करें रीजनेबल सब्सिस्टेंस की, कि वो रीजनेबली वो अच्छी खुशहाल ज़िंदगी रह पाए. क्योंकि कैलोरीज की बात कर रहे हैं, कैलोरीज 2400, उसमें वो सिर्फ दाल, रोटी, चावल खाता है, कैलोरीज ले लेता है. बट जो उसको चाहिए दूध, सब्जियां चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स और समथिंग विच इज़ नॉट एबल टू परचेज. सो यू वांट अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग. दिस इज अ चैलेंज. देन प्रोविजन ऑफ सेम्स. अब फूड का हमने बात किया कि हमने एक देखा योजना अंत्योदय अन्न योजना, वी कॉल इट AAY. सो हम फूड तो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, लेकिन उनको हम क्या एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उनको हम प्रॉपर सैनिटेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उनको हम जॉब दे पा रहे हैं क्या, उनमें हम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा पा रहे हैं क्या, या फिर जो सोशल एक्सक्लूजन है, जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑफ पुअर, वो हम हटा पा रहे हैं क्या? तो ये चैलेंज है. फूड तो हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उनको एजुकेशन देना, उनको बेटर हेल्थ ऑप्शंस देना, उनको बेटर जॉब देना, ये सब हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है जो आने वाले सालों में हमारे सामने आएगा. सो दिस चैलेंज वी हैव टू फेस.
ये भी स्लाइड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द चैलेंजेस. So with this we end the chapter. I will send you the PDF of this both of these slides so that you can take down your notes. And if you have any doubts, you can call me anytime. About tomorrow test, I will tell you what to do.